Welcome to Aries Agro Limited presents The Jeevan Agri Show. नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं जीवन हूं। आपने मुझे एरीज के उत्पादों के साथ देखा होगा। एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं यहां आपके साथ एक ऐसी बातचीत करने आया हूं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। एरीज एग्रो लिमिटेड जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का उत्सव आप सभी के साथ मनाने पर गर्व महसूस करता है। इस आयोजन के तहत हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला ला रहे हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखने वाले सम्मानित विद्वान शामिल होंगे। ये आदरणीय वक्ता अपनी अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम कृषि में एक उज्जवल भविष्य और अधिक लाभ की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आइए हम सभी मिलकर जय किसान जय विज्ञान सप्ताह को सीखने और प्रगति का एक यादगार उत्सव बनाएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भास्कर राव, जो एक प्रतिष्ठित एग्रीटेक कंसल्टेंट हैं और कृषि के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर राव खुले क्षेत्र की खेती, हाइड्रोपोनिक्स, नियंत्रित पर्यावरण कृषि सीए और इंडोर वर्टिकल फार्मिंग आईवीएफ के विद्वान हैं। उनका मुख्य ध्यान टिकाऊ कृषि समाधान, संसाधनों का अनुकूलन, उन्नत खेती तकनीक और प्रमाणन पर केंद्रित है, जो कृषि में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में डॉक्टर राव कृषि क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और किसानों को सशक्त बनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और रणनीतियां विकसित कर रहे हैं। आज वह हमें हाइड्रोपोनिक्स और इसकी महत्वता के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह नवाचारी तकनीक कृषि के भविष्य को कैसे आकार दे रही है। आइए डॉक्टर भास्कर राव के साथ चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर राव, स्वागत है और यहां आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों को अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। सर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है और यह पारंपरिक कृषि तरीकों से कैसे भिन्न है? Hydroponics is a soilless farming method where plants grow in a nutrient-rich water solution, which is called solution hydroponics, or it goes in an inert media. It is called substrate hydroponics. So whereas the traditional farming is done in the soil, basically hydroponics uses around 80 to 90% less water. It requires less land, enables faster plant growth, allows year-round production in controlled environments. Whereas in traditional farming, it minimizes the soil-related pests. Sorry, it helps in reduction of soil-related pests, diseases, environmental impacts like soil erosion. So hydroponics is, you could say, highly efficient in nutrient delivery to the crop for urban and also a very sustainable method of farming. Whereas the traditional farming is more dependent on the weather and season and climatic changes and soil quality, etc. हाइड्रोपोनिक्स को आधुनिक कृषि के लिए टिकाऊ समाधान क्यों माना जाता है? Sustainable because first thing, it is efficient use of the scarce resources like water usage. Efficient water usage because you are using very less water, you are putting it in a closed loop circuit. Then you have got like the reduced land requirements. You have got minimized soil degradation because you're not using soil, there is no much of soil degradation. It reduces fertilizer runoff because when you're putting some fertilizer, there is no runoff, etc. You could say year-round production. Reduce pesticide use because you're doing it in a controlled environment and you are supplying exact recipe to the crops. Energy efficiency can be increased with the help of renewable sources. And in fact, it supports the global food security. हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपनाने के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या हैं? Economic advantages is basically like higher crop yield, lower costs, and year-round production. So you have off-season production as well, which improves your marketability. While environmental benefits would be water conservation, reduction of carbon emissions,
sustainable land use practices. And it is, you could say, it is the perfect example for a modern agricultural practice that enables to achieve the sustainable development goals of any country. हाइड्रोपोनिक्स कृषि चुनौतियों को कैसे संबोधित करता है? Hydroponics basically tackles land scarcity. So by enabling the farmer to farm in compact spaces, less spaces, non-arable areas where there is no arable land, and especially in urban environments. So you are maximizing the yields. You could also go vertical by hydroponics. So that also improves the yield productivity by 10x. And also it conserves water, as we have already discussed about it. Efficient recycling because it's a closed loop system, and precise irrigation is given, so which uses 90% less water than traditional farming. Hence, all these challenges or all these advantages for hydroponics enables it to be more sustainable and more advantageous than over the traditional farming. हाइड्रोपोनिक्स को किसानों के लिए अधिक सुलभ और विस्तारित बनाने के लिए कौन से उन्नयन आवश्यक हैं? Basically, first thing is the training, farmer training, by conducting workshops, making them aware, setting up of some sort of demo centers so that they can come, see, and understand and adapt the technology. We should be able to develop some affordable systems, provide some sort of subsidies, and promote also local manufacturing. Maybe also low interest loans, etc., to promote cooperative farming, maybe. And because it involves a lot of IoT, so we should be developing on it best IoT parameters that control the parameters of growth, especially in terms of user-friendly, climate-adapted systems. It could also be using the local nutrient solutions rather than relying on imports. So basically, we have to build supply chains and promote premium pricing for the hydroponic produce. Market linkages play a vital role because this is a niche product. And the last focus would be on research and development on crop varieties that could be scalable to suit the local conditions of growth. क्या कृषि उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स को एक सफल व्यवसाय विकल्प बना सकते हैं? Yes, hydroponics is a promising business option, as you mentioned, for agricultural entrepreneurs. See, the basic knowledge of agriculture should be there with the person. Then it will help him in taking the best decisions. In India, it's rising because of the demand of fresh produce, pesticide-free produce, limited arable land, and the growing urban markets. And you see the effects of global warming, whereby there is some sort of reduction in production. Also, you could see, the ability of the purchasing power has improved, and entrepreneurs can succeed by focusing on special niche crops, which are exotic crops. They could target urban areas. The basic information that should be given to them is they should be starting it small and try to integrate technologies for efficient production. Marketing of the premium produce, which is very premium, which is also sustainably grown, and they should be establishing a strong channels or relationships between their consumers that will be helping them in growing their production, their markets. Obviously, there are a few challenges, which is basically a high initial investment cost and high energy costs that exist. But the business model offers scalability and profitability. Hence, it is one of the best options to select for any sort of agricultural entrepreneur in India. आपका बहुत धन्यवाद सर, कीमती मार्गदर्शन और आपके मूल्यवान समय के लिए। Thank you so much. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सत्र से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी और यह सभी को बेहतर उत्पादकता हासिल करने में मदद करेगा। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक
एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो से जुड़े रहें और हमेशा याद रखें, बेहतर फसल बेहतर कल।